अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सिम डालने से। ये रहा सिम का जैक और ये मैंने इसको खोल लिया। बियोस है तो डेफिनेटली दो ऑप्शंस होंगे सिम लगाने के। ये एक नैनो लगेगी इसमें, दिस इज सिम 1 और दिस इज सिम 2। इस पर लिखा हुआ भी है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी लग सकता है एडिशनल, लेकिन 128 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, तो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं मुझे। लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं, दो तरह की सिम्स लग सकती हैं इसमें। मैं अपनी सिम जो है वो यहाँ पे फिट करके और स्टार्ट करने वाला हूँ उसको। अच्छा जी, सिम लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Samsung Galaxy S9 secured by Knox, powered by Android। Samsung का लोगो। ओके जी, स्टार्ट। English, United Kingdom, emergency call accessibility, that's a start। Hawaii eLife, I need to connect to the Wi-Fi। Okay, it's connecting, it's connected, let's play next। अच्छा जी, agree to the terms and conditions। जिंदगी में पढ़ी कभी हमने जो है वो terms and conditions तो पढ़ी नहीं है, so straight away all। okay, agree। checking for updates, just a second। Google sign in, let me do a sign in first। okay जी, I agree। no backups, next। protect your phone, set up a intelligent scan, set up face recognition, set up iris scanner, set up fingerprint scanner। SXH तक जो है वो मेरे पास फिंगर स्कैनर था। let's try for set up face recognition। to use face recognition to unlock your phone or to verify yourself in apps, you will need to set a secure screen lock, register your face, continue। to use face recognition securely, you need to set a pattern, pin or password। okay, let's have a pin। required pin when device power on, do not required, continue। now this pin, if you forget, you will need to reset your phone and all data will be erased। okay, disclaimer, straight away, continue। get ready to unlock your phone by showing your face। I'm showing my face। अच्छा जी, काफ़ी जल्दी रजिस्टर कर लिया इसने, फास्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट। लॉक स्क्रीन, हेलो, सेट डिस्प्ले, हाइड कंटेंट, नोटिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट। प्रोटेक्ट योर फोन, योर स्क्रीन लॉक हैज बीन सेट अप सक्सेसफुली। ओके जी, गूगल सर्विसेज, मोर, अग्री, नेक्स्ट, नो थैंक्स। ओके, apps will be downloaded when Wi-Fi is available, essential apps, next। sign into your Samsung account। I believe I forgot my Samsung account, so फिलहाल skip का ऑप्शन है, skip करके आगे बढ़ते हैं। from Samsung Cloud, restore your data from Samsung Cloud from your old device। use a smart switch to transfer apps and data from your old device using a USB cable। don't restore। okay, for the timing restore नहीं कर रहा मैं। check out useful features, I'll check out next। all done, your phone is ready to use। SIM card, SIM 1, definitely done। okay,
इंस्टॉलिंग। मोबाइल डेटा बंद कर दूँ मैं पहले, उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाके सबसे पहले अबाउट फ़ोन देखते हैं, गैलेक्सी S9 प्लस, माई फ़ोन नंबर, एवरीथिंग, स्टेटस, लीग इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आई नीड टू चेक, एंड्रॉयड वर्जन 8.0.0, it will definitely update to 8.0.01 I believe. Here it is. I think it was Donut or something. I don't remember the name. ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट बाद में करेंगे, डिवाइस मेंटेनेंस पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखनी है। लेट्स क्लिक ऑन द मेमोरी। 2.3 GB जो है बस मैं प्रोवाइड की हुई है आउट ऑफ 6 GB। 6 GB बेहतरीन। लेट मी क्लीन नाउ 565, so it will give me more space. Okay जी, 2 GB used out of 6 GB. You can check that. ओके जी, आगे पढ़ते हैं। स्टोरेज 19 GB इज ऑक्युपाइड आउट ऑफ 128। 128 बहुत है मेरे लिए। मेरे ख्याल में 64 GB भी भरने में मुझे काफ़ी अर्सा लग गया था, क्योंकि मैं यूजुअली भरता रहता हूँ अपना मोबाइल। तो जी ये है कैमरा वगैरह का रिज़ल्ट। आप भी अपने कमेंट्स हैं सबसे पहले तो, कि हाउ यू फाइंड गैलेक्सी S9 प्लस। बैटरी कैमरे की सब लो हो रही है, तो आपके जब कमेंट्स आते हैं तो उसके बाद विल डिस्कस के फर्दर इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। आई लव द स्क्रीन सेवर बाय द वे, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ओके जी, सी यू, बाय बाय।